रिग्रेस करने की जरूरत है. So we just need the highlights. So the pooling layer does just that thing. Okay. So since a feature is captured by the once a feature is captured by the convolution layer, it is not necessary to use the entire picture, but certain highlights only. Pooling layer uses special filters to capture the average, either the average or the maximum of the relevant numbers. So for example, let's consider a 4 by 4 block. Let's say that this is the 4 by 4, we have this 4 by 4, 4 here and 4 here and 4 here. 4 by 4 का मेरे पास reduced image है of features. Now I now apply a filter of 2 cross 2 with a stride of 2. तो ये फिल्टर यहाँ गया, फिर स्ट्राइड 2 का स्ट्राइड लिया, फिर आगे यहाँ पे आया, फिर नीचे 2 का स्ट्राइड लिया, यहाँ पे आया, and then here. So it is sliding from left to right and then moving here from right to, again from left to right. Now this comprises of 4 numbers. Instead of taking all the 4 numbers, a max pool layer will take the maximum of them and put in 9 here. Likewise 4 here, likewise 8 here, and likewise 8 here. Why? Because this 9 shows highest correlation. मान लो this 9 का इसका receptive field मान लो 5 by 5 ही है. What does it show? That a 5 by 5 horizontal line is most probably here. There is some probability कि यहाँ भी हो, पर यहाँ तो कोई probability नहीं है ना? So a higher value of the number shows greater correlation. So we are interested in the highest correlated feature. तो इसलिए हम max को output array में डाल देते हैं. The maximum of them. This is called max pool. We can also take an average, but typically we take the max. So this is done by the max pool layer. So इस तरह से convolution activation pool. This comprises one stage. और वो जो image है, that is not, so you see the image is even more reduced. यहाँ 4 by 4 था, यहाँ 2 by 2 हो गया. ठीक है? So as you can see, it's even better. ठीक है? So you can see it mathematically also. This is 4, padding नहीं की गई है, 4 minus 2 divided by 2 plus 1. ठीक है? तो 2 by 2 का array आ गया. So in general then we will have this kind of a thing. Yeah. So in general, if length by breadth is the image, W is the filter width, R is the stride, then we know what it is. L minus W by S plus 1, B minus W by S plus 1 cross N. That will be the size of the final image. All right. Now, one problem that we have is, so we have a long pipeline of convolution, activation, pooling, again convolution, activation, pooling, again convolution, activation, pooling. इस तरह से ये चलता रहेगा. तो फिर imagine what will happen when we apply the back propagation. So because back propagation का ये, so if this is the sigmoid function, this is the sigmoid function. This is the sigmoid function. There is zero slope and there is zero slope here. This is an active neuron. This is a dead neuron. है ना? Now, when I sort of see the slope is maximum at this point and 0 here and 0 here. Now, this will obviously create a problem. What is that problem? Gradients will reach zero. हाँ, vanishing, इसको कहते हैं vanishing gradient. What will happen is this active neuron, जो कि important neuron है, after all this, it's an active neuron. है तो active, a neuron which is in this state is active and therefore it must adjust its weight strongly. You know that the delta learning rule क्या है? जो back propagation हम करते हैं उसमें delta learning rule क्या है? W is equal to W minus learning rate into local gradient into input, right? Yes, ma'am.
तो ये जो लोकल ग्रेडियंट है दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन. The local gradient है, for that you will have to differentiate the activation function. And when you differentiate the activation function, you will find, unfortunately, that for an active neuron, the differential is coming to be zero. Which means an active neuron जिसकी input काफी high है, okay, so learning rate into local gradient into input होता है. तो इनपुट जिसकी हाई है यानी जिसको एक्टिव होना चाहिए था, टर्न्ड ऑन है, उसने अपना वेट हार्डली एडजस्ट किया, डेल्टा लर्निंग किया ही नहीं. इज इट डन? नहीं ना. तो इवन इफ इट्स एन एक्टिव न्यूरॉन तब भी अपना वेट एडजस्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि इट शुड हैव बीन मोर सेंसिटिव. ऑलराइट. So this is called the vanishing gradient problem, and this will increase as we go behind, back propagating करते समय from the output stage to the previous to the previous to the previous. वो इसका इसका असर जो है बुरा होता रहता है, and the neurons sort of don't adjust their weights and there is no learning involved. It takes a huge time also. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा. So therefore we can't use this kind of an activation function. This saturated slope has to be tackled, especially for active neurons. तो क्या करते हैं? We use the ReLU function, rectified linear unit. We use the ReLU function, which is actually just like this and like this. So zero, and so the non-linearity comes from here. ये bend हो रहा है, यहाँ से non-linearity आ रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे. So what happens is that ये जो dead neuron है उसका slope अब भी zero है. The slope is a step function now. Instead of this kind of a function, the slope is a step function. यहाँ के लिए एक constant और यहाँ के लिए यहाँ constant. तो यहाँ zero और यहाँ since it's a straight line, a constant slope. Now since there is a constant slope, so at least you are not afraid of the neuron becoming unresponsive to learning. तो वो जो gradient है वो zero नहीं होगा, तो at least it will learn and readjust its weight. So that is good. So active neurons can readjust their weights suitably to match the training data. ठीक है. I don't know when I'll be able to give you your question paper, answer sheet, sorry, because I'm just not, getting the, मतलब उसको चेक कर, लेकिन मैं चेक कर रही थी और चेक करते हुए मुझे कुछ पैटर्न्स नजर आए. वो पैटर्न्स ये है कि क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि दिस इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ 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 डॉट्स थे. ठीक है. एंड दिस वाज द थ्रेशोल्ड 0.5. एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल आस्क यू कि कौन सा ट्रू पॉजिटिव है और एंड कौन सा ट्रू नेगेटिव है. तो आप में से मोस्टली लोगों ने इनको क्या कहा? ट्रू, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, व्हाट आर दे? कुछ यहाँ पे थे एंड कुछ यहाँ पे थे. टेल मी, दीज आर व्हाट? फॉल्स False पॉजिटिव और negatives. यस, फॉल्स नेगेटिव्स. जबकि आप में से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ने इसको फॉल्स पॉजिटिव कह दिया. एंड दीज आर दी फॉल्स व्हाट? Positives. False यस. positive. हाँ, या तो ये 0.5 वाला है. सो 0.5 के ऊपर, बिकॉज दिस कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट इज दिस, द कर्व इज द प्रेडिक्टेड ये है, और ये ऑब्वियसली एक्चुअल है. तो आपने एक्चुअल को ले लिया, तो प्रेडिक्टेड इज दिस. तो ये सारे पॉजिटिव डिक्लेयर होंगे और ये सारे नेगेटिव डिक्लेयर होंगे. तो ऑब्वियसली इस साइड पे सारे नेगेटिव जा रहे हैं. अगर फील्ड यहाँ पे है तो ये सारे नेगेटिव डिक्लेयर होंगे, जबकि वो थे पॉजिटिव. एंड लाइकवाइज ये थे नेगेटिव, लेकिन इनको पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाएगा. तो यू हैड मेड, मेनी ऑफ यू मेड अ मिस्टेक हियर. तो
आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल जो पैटर्न मैं देख रही हूँ वो जस्ट पैटर्न डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो व्हेन आई विल बी एबल टू रिटर्न, तो कर लूंगी, डोंट बॉदर, इट्स ओके. Then question number one was on regularization. So an important thing that many of you missed saying is कि why lasso, lasso करता क्या या ridge करता क्या है. So you just mentioned the equation, that's not sufficient, you have to say that it penalizes the cost function. नहीं लिखा है, कई लोगों ने नहीं लिखा है. That is the main idea. क्वेश्चन नंबर 2 तो न्यूमेरिकली था लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने गड़बड़ की. और यू सी द आर स्क्वायर की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही थी उसमें, राइट? Yes, ma'am. कैन यू से व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें रिग्रेशन किया ही नहीं था ना. और इट वाज, ज्यादा हाँ, काफी एरर्स थी. हाँ, या बेकार प्रेडिक्शन कर रहा था मतलब उससे भी. एग्जैक्टली, सो इट वाज नॉट अ प्रॉपर मॉडल एट ऑल. प्रॉपर मॉडलिंग हुई ही नहीं. मोस्ट प्रोबेबली ट्रेनिंग प्रॉपर हुई ही नहीं है उसमें. सो इट वाज दैट पॉइंट वेयर द ट्रेनिंग इज नॉट इवन प्रॉपर, इसलिए नेगेटिव आ रहा था. वरना टिपिकली नेगेटिव नहीं आता है. कांस्टेंट टर्म अगर रहता है तो पर नेगेटिव ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, बट टिपिकली इट इज नॉट नेगेटिव. और उसी के बी पार्ट में आई व्हेन आई आस्क्ड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर, then some people have written very irrelevant things. It can handle huge data set and it is effective and all that, but हो क्या रहा है? The thing is, it is being normalized with the degrees of freedom. The things are being normalized by degrees of freedom. जितना degree of freedom मिलता है उसके अनुसार उसको measure किया जा रहा है. So that you haven't written, many of you haven't written. So those small subtle things. Question number 3 जिसमें classification task, many people have given the example of leaf, petal and sepal length and breadth, जबकि मैंने आपका अपना classification task बोला है. I'm not asking you a standard classification task. I asked you to think about some classification task. But I don't want a answer which is a simple answer and that is taken from the text. आपने आपकी खुद की सोच आनी चाहिए थी. So again, I feel this is not done. And question number 4 मैंने अभी कहा है कि you didn't do it properly. And when the threshold is changed, तो आपको उस ग्राफ पे दिखाना चाहिए था कि कौन सा पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया. So you haven't shown that. Many people have shown the TPR FPR curve, which is not required. Finally, confusion matrix. Confusion matrix में there might have been some confusion between which is the one to be classified, true positive कौन सा है and true negative कौन सा है, या false positive कौन सा है, false negative कौन सा है. So that depends on whether you want to predict the no's or whether you want to predict the yeses. So I given that much of benefit of doubt. कोई बात नहीं, you can take either one of them. But उसके बाद भी कई लोगों ने गड़बड़ की है. Many people are not very clear. So I haven't penalized if you have taken yes or no as the positive. Any one of them can be taken as a positive. Fine. And then I suppose the decision tree, many of you have not been able to do. So that's in general the performance. I do not know. Up till now, I haven't got anyone who is coming close to 15, 14. नहीं है. 11, 12 है. Kami papers, but then many of you have faulted on understanding. Okay, कोई बात नहीं, होता है, minor ही तो है. So please be careful about what I'm asking you to do and understand the things. All right. So finally, so we do the ReLU function so that on ReLU में आप देखो the function is represented as this: fx is equal to max of 0 and x. ये x है, so 45 डिग्री है, तो fx the activation is equal to the input. जितना इनपुट होगा उतना ही एक्टिवेशन हो रहा है वैल्यू में, जबकि उसमें ऐसा नहीं था. द सिग्मॉइड वाज लाइक अ स्विच, 1 to 0 में वेरी कर रहा है, पर यहाँ पे काफी हाई भी हो सकता है. x ज्यादा है तो ये भी हाई हो सकता है. दिस कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम.
So because now the gradient is constant, and uh, uh, when we sort of multiply it backwards, तो वो अगर error positive है मतलब greater than 1 है या negative भी हो तो greater than 1 है, तो then we have a problem of very, I might have you might remember also कि ये cost function था हमारे linear regression में, and this was the cost function and this was the weight. So kabhi kabhi one is the very small step size. The step size may be too large, in which case it just vibrates between this end and this one and never reaches the low point. Our idea is to minimize the cost function and reach this low point. वो low point तक आएगा ही नहीं अगर step size बहुत high है. Now this is the exploding gradient. इतना ज़्यादा gradient है कि कुछ ज़्यादा ही adjust हो रहा है W. Okay, so the W adjustment is too large. So the ReLU can have this problem. Any form of ReLU can have an exploding gradient problem because gradient अब zero नहीं है, positive है. So what will happen is when you now do the multiplications and if the error is greater than 1 in magnitude, तो वो explode होता रहेगा. Okay. So with a gradient which is not fractional but a number, this can create a problem. But a number with an integral part. Okay. So इस तरह से we learn features and finally we come to the last part of the neural pipeline, CNN pipeline, which is actually where we want to do the classification. वहाँ पे we use a fully connected MLP, multi-layer perceptron. Why? Because we want to do classification. We have learned the features. अब जो image आएगा, it will not be a huge image of 1K by 1K. It will not be a very big image. It will be a small image, a set of small images rather, a large number of small images, each of which represents a level complex feature. So now that the size is less, but of course the number of filters are larger. वहाँ पे input में 3 थे, RGB थे, यहाँ पे larger होगा, large number of such layers, but still much less than K by 1K. So the small image is now applied to an input, to a fully connected flat. अब तक deep था, अब तक the network was deep. In the final few stages, it will be flat. Okay, so it works on a greatly filtered and um, reduced form of the original image due to a series of convolutions and pooling. Therefore, this is the flat part of the CNN where results are classified just like any MLP. There can be one or more fully connected layers. यानी इनके hidden layers भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा hidden layers भी हो सकते हैं, because now there are so many inputs. The activation function used in the FC layer may be ReLU if aggregating image information, क्योंकि ReLU में output is equal to input. If you want to aggregate, so it can be ReLU, but typically it is softmax for performing the classification. Okay. So here is an example architecture called AlexNet. Okay. So this AlexNet was experimented upon, and इसमें क्या होता है कि you have this RBG और इन्होंने image को 224 cross 224 का size लिया था. This is this. I think we have done away with the time. Okay, fine. So we'll continue tomorrow. We'll do the AlexNet, etc. tomorrow. Just a sec.
ये लो, ये लिंक लो।